Welcome everyone. Welcome to another session. So in this video, what we are going to do is we uh, start working on the worksheet. Uh, I'll share this worksheet with you so that you can also do the practice. So let me share the screen first. So the first thing first, what you have to do is you have to open the open the environment in which you are working. So so I have already activated the relevant environment, that is HRA, that we have developed last time. So make sure that this environment is created. So if you are not activated this environment, just write the command conda activate HRA. Once you will enter this command, your relevant environment will get activated. So this is simple process. So one important thing you have to do is you have to install an important package that is relevant with the Jupyter Notebook kernel. So pip install IPY. So just execute this code so that this IP kernel will be installed in your relevant environment. So I'm not going to enter this code because I've already installed this package. And one more important thing, if you want to see that how many packages you have already installed in this environment. So for that purpose, you just have to give a command conda list. Once you will enter this command, you will see all the environment that you have already installed in this environment. So scikit, you can see that plot tree, that is this library is used to plot and visualize the data. The pandas, that is we are going to use this library in order to actually see the behavior of the data. And so now let's one more important thing here you have to do is you just locate the path where your folder is located. So for example, you might uh, be uh, active in this particular path. So what you just have to apply the cd function in order to access your folder. So like I have already made a folder at desktop with the label cd python. So I've just locate the path where my folder is located. So once you will be finished with the Miniconda environment, these important things, the next thing you have to activate, uh, you have to open the VS Code environment. So there are a couple of things which are important here. See, first you have to open the folder where you have uh, um actually make the files. The last lecture I have shown you that there are two types of file on which we are working. The py is the Python extension, and ipynb is the extension of the Jupyter Notebook. So we are working in the P2 file, that is ipynb. So just select this file and start actually uh, applying these codes. So before you run these codes, what you have to do, you make sure that the kernel is activated. Here you can see that the HRA environment is already active, where it is shown that the relevant Python version, that is 3.11.7. So now you have to import all the libraries that you have already installed in your HRA environment. So here you can see that you actually apply the hashtag signs. You can actually write your notes as well. Here you can see that I have already mentioned that in this command line we are going to import all the libraries. So we need pandas, seaborn, and numpy, plotly.express. So we have actually apply these line of codes: import pandas as pd, import seaborn as sn, and numpy as np, and .express as px. So once you execute this line of code, the green tick show you that this code is activated. So if you want to create new code lines, so just you have to add uh,
the code cells by just clicking on this button. And now let's see that how you actually import the relevant file from the from your system. If you want to access the file in this, here you need to focus on that. What are the different methods we are going to apply? So the first method we are using is the pd.read_csv. So this method uh, actually read our IBM.csv file. So this file I have already shared. Make sure this file is you have pasted this the file in your Python folder. Once you will be having this file in your relevant folder, this file automatically shown here. So you are actually applying here the read_csv. Once you enter this code, this line of code will actually help you to read your data file from your system. So for our ease, we are actually labeling this file as df. Now in the next all the codes, in all coming codes, we will be using the df file. You can label it with any name, but here I'm just putting and labeling this IBM.csv value df. So next function, the method that we are going to apply is that if I just want to see that uh, the type of data which I'm having in my data file. So this is the function. Again, we just have to write a df dot. Dot actually uh, apply here uh, in order to execute a relevant function or the method. So dot के बाद हमने data type देखना है, तो उसके लिए dt डी टाइप्स जो है वो हम टाइप करेंगे. तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी all the variables with the relevant data type. So a जो है वो integers में है, iteration जो है वो objects में है. So this will help you out to see that कि आपके data जो है वो integers हैं या objects हैं किसी और format में. तो integer का यहाँ पे meaning है the data of age is in numbers, and iteration, business travel, ये हैं objects की form में. These are not numerical value, but these are actually written in alphabets. So this list shows you that the different types of the variables that you are having. So next command we are using here to see that what are the different variables that are included in your data file. So df again, हमने इस data file में से पे एक function apply कर रहे हैं dot head and parenthesis. तो ये फंक्शन असल में क्या करेगा, इस डाटा फाइल में जो कि आईबीएम की फाइल थी उसको हमने डीएफ में कन्वर्ट किया. इसमें जो हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी हमें हम यू वांट टू सी ऑल दोस हेड्स. जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी दैट ऑल दी वेरिएबल्स इन योर डाटा फाइल. सो जैसे आप देख रहे हैं, एज का आपको कॉलम नजर आ रहा है, ट्रेशन का है, बिजनेस ट्रैवल है, डेली रेट है, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, सो ऑन सो फोर्थ. So this help you see the all the heads of your data, and this information is important. You can see that it is showing us the 5 rows, first 5 rows, and there are 35 variables or 35 columns in our data set. So आप अगर ज़्यादा इसमें rows को देखना चाहते हैं, just have to type the 10. So parentheses जो हैं वो function को call करने के लिए हम use करते हैं. तो head और parentheses अगर एम्प्टी है तो फर्स्ट 5 देगा. अगर इसमें मैंने 10 लिख दिया तो ये हमें फर्स्ट 10 रोज देगा. ठीक है. सो इट्स अप टू यू कि आप इसमें से कितनी रोज को देखना चाहते हैं. ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज अबाउट डेटा कॉलम्स. अभी मैं डिस्क्राइब का फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहा. वी जस्ट वांट टू सी हियर दैट कि हमारी डाटा फाइल में कितने कॉलम्स हैं या कितने वेरिएबल्स हैं. So you have to write df.columns. Once you execute this code, so you can see that all the variables that are in your file, it can be seen in a one click. And the second command is if you want to actually see a particular variable, उसके लिए जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. df के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे. स्क्वायर ब्रैकेट जब लगती है तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं
फॉर अ स्पेसिफिक वेरिएबल फ्रॉम आवर टोटल लिस्ट। इसमें मैं इटरेशन ले रहा हूँ, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। और उसके बाद डॉट यूनिक का मैं फंक्शन अप्लाई कर, अगेन डॉट के बाद हम कॉल कर रहे होते हैं मेथड को या फंक्शन को, तो हमने यूनिक का फंक्शन जो है वो देखना, असल में हम देखना चाह रहे हैं कि इस इटरेशन के वेरिएबल की अरे क्या है, इसकी अरेंजमेंट्स क्या हैं। सो अगेन दिस डाटा टाइप इज ऑब्जेक्ट, और इसमें येस और नो में डाटा कलेक्ट किया गया है। अगेन दिस इज द नॉट न्यूमेरिकल डाटा। सो बाय अप्लाइंग दिस लाइन ऑफ कोड यू एक्चुअली सी the array of the data, the type of the data। इसी तरह से हमने डॉट यूनिक यूज किया, हम डॉट वैल्यू काउंट्स लगा के ये देख सकते हैं कितने लोगों ने इटरेशन को यस किया और कितने लोगों ने नो किया। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली, अब इसी तरह से यू कैन अप्लाई दिस मेथड टू अदर वेरिएबल्स एज वेल इन ऑर्डर टू गेट द सेंस ऑफ द डाटा। ठीक है। एंड ओके, वैल्यू काउंट यू आर ऑलरेडी डन। सो इसी तरह डेली रेट पे भी जो है इसी तरह से आप लगा के देख सकते हैं। So again, you just apply the code and you will see that the daily rate value counts will be visible। कॉलम्स को देखने का एक और तरीका कार है, आप लिस्ट का फंक्शन अप्लाई करें, लिस्ट के बाद डाटा फाइल और उसमें कॉलम्स जब आप लिखेंगे, सो वंस यू विल एंटर द लिस्ट ऑफ द कॉलम्स विल बी शोन टू यू। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्क्राइब के अंदर जाके भी फर्दर वेरिएबल्स, पर्टिकुलर वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कहते हैं जी ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स मुझे शो ना करे, सिर्फ मुझे जो मेरे पास जो दूसरी वेरिएबल्स की कैटेगरी है जो कि आपने शुरू में देखा था, जैसे कि इंटीजर्स हैं, आप उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्राइब के बाद पैरेंथेसिस में एक्सक्लूड कर दें ऑब्जेक्ट वेरिएबल। वंस यू एग्जीक्यूट दिस कमांड व्हाट वुड हैपन, ये ऑटोमेटिकली जो है जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स थे जिसमें यू नो दैट एट्रिशन का वेरिएबल था, लेकिन वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, अदर वेरिएबल्स एज वेल जो कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म। सो इसने सिर्फ जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है जो आपके पास दूसरी टाइप थी वेरिएबल्स की, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। सो व्हाट आई वांट कि आप इनको अप्लाई करें इन फंक्शंस को एंड डू अ प्रैक्टिस, एंड वी विल start working on the data visualization in the next lecture। Thank you very much।